Assalamualaikum everyone, this is Sunny Nasir. Welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to talk about your career in France after graduation. So basically there are two contracts that are offered in France. एक CDD होता है और एक CDI होता है. So CDI is basically an indefinite long-term contract. So होता ये है कि once you're hired, आपको वो एक परमानेंट लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है. एंड बिकॉज फ्रांस में वर्किंग लॉज इतने स्ट्रॉन्ग एंड लेबर लॉज इतने स्ट्रॉन्ग है दैट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर देम टू फायर यू और गेट रिड ऑफ यू इफ़ यू हैव अ CDI, बिकॉज आपका एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है. However, CDI में आपके जो probation period होता है that's around 6 months, and it's very tough because obviously if it's a lifelong, almost lifelong commitment, they want to make sure कि they have made the right choice. उसके अलावा जो CDD होता है that's a short term contract, fixed term contract basically. आपको 1 साल का मिलेगा, 2 साल का मिलेगा, 3 साल का मिलेगा, and then that's it. It can be extended, obviously it can be renewed, लेकिन आपको at a time एक टेम्प्रेरी बेसिस पे मतलब आपको एक फिक्स्ड टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा. It is obviously quite competitive to get a CDI because everybody wants a CDI, but it's not like it's impossible to get it. There are many people who have actually secured it. So it's not a normally कि बिल्कुल भी नहीं होएगा. It is possible. So if you secure that, you can obviously get a work permit. अपने student visa को आप work permit में convert करा लो and then you can stay there. उसके अलावा there is, you can obviously start up a company. आप अगर अपनी कंपनी बना लो, आप उसमें से if it's a good idea, if it's a good startup, then they can give you a work permit for a specific period of time as well. अगर CDI आपको मिलता है तो obviously आपको 4 साल का देंगे, फिर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा. सिमिलरली विद CDD, जो जितना भी आपका टाइम पीरियड करेगा उतना वर्क परमिट मिलेगा, देन यू हैव टू गेट रिन्यूड. जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल नई जॉब मिली, ठीक है, अभी आपने ग्रेजुएट कर लिया, यू डोंट हैव अ जॉब, यू डोंट इवन हैव अ CDD एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया फॉर अ कंपनी येट, तो आपको एक APS मिलेगा, वो जैसे टेम्प्रेरी वो 1 साल का वीज़ा where you can actively look for a job. So उसमें basically होता है कि it's you have the same rights as a student in a way कि you can't do a full-time job, but you can work for 20 hours a week or 964 hours in a year, ठीक है, and आपको you have to search for a job meanwhile actively. So if you get a job, then you can obviously instantly convert that visa to a work permit, but if not तो आप उसमें 1 साल गुजार सकते हो. CDD और CDI का दोनों में ये है कि आपको जो सैलरी मिलेगी इट शुड बी मोर देन 1.5 times more than the minimum wage. So around 2017 के टाइम पे it was like 2,220 euros per month. So कम से कम ये आपने मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड रीच करना होता है to be able to secure a work visa. अब इसमें ये है कि it's not there are many people who actually do find jobs and they do get to stay back in France. It's quite common. Especially सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको हेल्प करती है वो हेल्प करती है आपकी इंटर्नशिप, जो कि आपकी मास्टर्स में होती है 6 months की इंटर्नशिप. सो इट कैन पोटेंशली लीड टू अ जॉब एज वेल. एंड मेरी यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट ये है कि अगर आपको 1 साल की टीचिंग है एंड द नेक्स्ट ईयर अगर आपको जॉब मिल जाती है आप डायरेक्टली जॉब स्टार्ट कर सकते हो. एंड आपकी जो 1 टर्म की अगर कोई टीचिंग है तो वो आप रिमोटली ले सकते हो एंड यू कैन टेक अ जॉब ऑफर. अगर इंटर्नशिप की जगह आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाती है, वरना यू डू द 6 months internship and that can also be kind of like a probation period for you, and they test you and they test your skills and they see if they can like hire you long term, then they can also give you a job contract after your internship ends, and that happens a lot by the way. अब इसमें ये है कि it obviously happens a lot to people in IT sector, in engineering, in you know these kind of technical hardcore skills. बाकियों में भी होता है, मार्केटिंग, बिजनेस, डेटा एनालिसिस, ऑल ऑफ दैट, उसमें बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन उसमें अगेन फ्रेंच लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. यू शुड बी एबल टू give an interview in French. जब आपको हायर करें, even if you go to an international company, you should be able to have
a conversation in French, and you should be able to tell them कि I can understand and I do I do have a certain level of expertise in the French language. So ये मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी कि अगर आपने फ्रांस में रहना है, आपको लैंग्वेज सीखनी है, मतलब you cannot get around without learning the language, obviously. मतलब you can't survive there for long, right? Let alone get a PR or get a like a passport. अब इसमें ये है कि to get a passport or to get a PR, उसमें ये होता है कि if you it's kind of confirmed, but I would still say कि आप एक बार check भी कर लें. But ये मैंने अपने कुछ अर्सा पहले check किया था. I don't know if it has changed. I don't think it has. But ये होता है कि if you do a 2-year masters from France and then you work there for 2 years, you can apply for your nationality. And it takes around a year as well. So 5 साल लग जाते हैं from the start of your master's degree to get your nationality. Otherwise ये भी होता है कि अगर आप एक साल का भी करो तो आप वर्क परमिट ले लो एंड देन उसको रिन्यू करो एंड देन दैट टर्न्स इनटू अ नेशनैलिटी और लाइक रेजिडेंस परमिट. So yeah, basically ये है कि in conclusion, CDT, CDI, everybody looks for CDI. आप networking game on रखो. That's very important to work and to be able to work in France. And again, for networking, you need French skills. बहुत challenging है. Trust me, I understand because I'm going through the same thing. Before I came to France, मैंने A2 level का exam दे दिया था, but it's still not good enough. So you should at least be B1 and actual B1, and you should be able to make a conversation, a proper conversation in French when you're going for the internship period. Networking is very important. Websites बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर लो. इसमें अब ये भी है कि जैसे UK होता है, USA होता है, उसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप सिर्फ स्पॉन्सर्ड कंपनीज पे जाके काम कर सकते हो कि अगर ये पर्टिकुलर कंपनी स्पॉन्सर्ड है और वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, only then they can sponsor the visa. That's not the case in France. Anyone can hire you, but सैलरी थ्रेशोल्ड बेसिकली आपने मैच करना होता है कि आप मिनिमम 1.5 सैलरी जो है ज़्यादा करो मिनिमम वेज से per month, and it's a CDD or CDI contract, and you would get the visa. So even if it's a startup, you can get like a work permit on the basis of that. So basically the only challenge is to find a job जो आपको इस particular salary को match कर सके. It's not that difficult, but it's not that easy either. इसमें ज़्यादा आप एक्सप्लोर करें, नेटवर्किंग करें, अप्लाई एवरीवेयर. इट्स वेरी मतलब ऑब्वियसली लाइक आई मेंशन बिफोर एज वेल कि आप 100 जगह अप्लाई करेंगे, आपको 4 जगह से रिस्पॉन्सेस आएंगे. इट कैन बी वेरी डिस्करेजिंग, इट कैन टेक वेरी लॉन्ग. इंटर्नशिप लेना बड़ा मुश्किल हो सकता है, बट वंस यू डू फाइंड इट, it's pretty easy from there on. So yeah, thank you so much for watching. Let me know if you have any questions. Connect with me on Instagram on Stitching Consciousness. The link is going to be in the description box. Bye bye and good luck.